Hello students, welcome back to my channel for a power pack revision of chapter number 2 of Capital Market and Securities Law subject. I am Sales Anupama Pandey presenting before you a very precise and student friendly notes for the subject for a revision purpose. I hope you have gone through the revision of chapter number 1, and if not, please watch as soon as possible. As the time is running, we have our exams quite nearer. So as you can see on the screen, you may pin me on the number visible for the notes and for any other assistance regarding the exams. I will be there to help you out. Now we can just start. So as you can see, I have also opened the module. What you can do is you can just match the content of the module with the PPT so that you will be getting a confidence that yes, you have covered the entire chapter and nothing is missed out from the module. So this will boost up your confidence and you will be very well prepared with the each and every topic of your module itself. Okay, so we can just get started with our topic number 1, which is regulatory framework. So as you are aware, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले वहां पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमको दिया होता है. आपके चैप्टर का नाम क्या है? सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया. So if you may recall from the chapter number 1, what is a secondary market? It is a market जहाँ पे पब्लिक इशू या फिर आप आईपीओ बोल सकते हो, वो आ जाने के बाद जो कंपनी के शेयर्स हैं, these get traded among the investors themselves. Okay? एंड जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है. तो सेकेंडरी मार्केट, अब वहां पे इन्वेस्टर्स के बीच में अपने आप हो रहा है वहां पे ट्रेडिंग, बट वो उसके ऊपर एक हमारा वॉचडॉग होना बहुत जरूरी है. तो इसीलिए यहाँ पे हमको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में पता चलेगा कि क्या क्या रेगुलेशंस हैं जो उसको रेगुलेट कर रहे हैं. ओके, सो आर वेरी ओन सेबी 1992, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 and our Companies Act 2013 along with the rules made thereunder. So development of stock market in India is very basic. You can just go through the pointers here and you will get a very well idea of the development of stock market in India over the years. This is for your knowledge purpose and this is very generic in nature. This is not to learn. There is nothing to learn here. Okay. Our next topic is stock market and its operations. Stock market and its operations are overlooked by the stock exchanges. So what is a stock exchange? So it is a marketplace for buying and selling of securities, for ensuring liquidity and reflecting the economic health of the country. Legal definition as per SCRA क्या है इसकी? A stock exchange is any body of individuals or a body corporate under the Companies Act 2013 or the earlier act for assisting, regulating and controlling trade in securities. So this is very basic. Stock market के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया. अब उनका रोल क्या है? What is the role of stock exchanges? अब यहाँ पे 4 टाइप के रोल हैं. If you want to see in module, आपके मॉड्यूल में कैसा दिया हुआ है? Here is a definition of stock exchanges and here are the roles of stock exchanges. So here are a lot of pointers in the role of stock exchanges. So what I have done is I have divided these pointers into 4 roles. Okay, 4 major roles and uske andar there are few sub points which will cover the entire points of this module. Okay, points given in your module. So you will be not missing out on any point. Okay, and it will be very easier for you to learn. So economic role, it is the economic barometer. हमने chapter number 1 में पढ़ा था. It attracts foreign capital. Investor role में क्या आ जाता है? Mobilizes savings, continuous market, entry and exit हम कभी भी ले सकते हैं. Ensures liquidity, investor protection, safety and fair dealings. ये investor role के पर्पज से हो गया. कंपनी के लिए क्या करता है ये? सिक्योरिटीज इवैल्यूएशन, प्राइस डिस्कवरी करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, विजिलेंस, ट्रांसपेरेंसी
annual reports, and there are various n number of हमारे intimations which we have to give due to the corporate governance norms under the SEBI. Okay, so ये company role हो गया, and it regulates company management. एक कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर भी इसका अच्छा ओवरलुक होता है. सो इन्वेस्टर्स के साथ कुछ भी यहाँ पे हिडन नहीं रहता है. तो ये कंपनी रोल में आ गया. मार्केट एक्टिविटी रोल में क्या क्या आ जाता है? हेल्दी स्पेकुलेशंस, इनकरेजेस बिजनेस एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स. तो ये आपके 4 रोल्स के अंदर आपके इतने सारे सब पॉइंट्स कवर हो गए. सो ये आपको बहुत इजी होगा लर्न करने के लिए, ग्रेस्प करने के लिए. ओके, सो यू कैन जस्ट, I have given you a hint here and a small diagrammatic representation of the topic, so आपको easily learn हो जाएगा. सबको इसकी जरूरत नहीं है, but you may just go through these pointers जो कि आपको बहुत easy पड़ेंगे to recall the topics. Okay, so you can assume stock exchange is a giant mall. At the entrance, a thermometer जिसको हम इकोनॉमिक बैरोमीटर बोलते हैं, विच अट्रैक्ट्स मैग्नेट जिसको हम फॉरेन कैपिटल बोलते हैं. ओके, ये आपके 2 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए. इन्वेस्टर्स पुट मनी इन पिगी बैंक्स जिसको आप मोबिलाइजर सेविंग्स का नाम दे सकते हैं. एंड वॉक विद एन एटीएम कार्ड जिसको हम लिक्विडिटी एंड कंटिन्यूस मार्केट बोल सकते हो, एंड सेफ्टी का पॉइंट इसको बोल सकते हो. शॉप्स डिस्प्ले रिपोर्ट कार्ड्स, कंपनी वैल्यूएशन, ट्रांसपेरेंसी, मैनेजमेंट रेगुलेशन यहाँ पे कवर हो गए. In the corner, a gaming zone which is healthy speculation. Okay, ये मैंने बस आपको याद करने के पर्पज से ये बनाया हुआ है. If you want, you can just make your own points to learn and make your own hints to remember the topic. Okay, because points are way too many. So ये मैंने इसीलिए बना दिया कि आपको होना चाहिए कुछ लर्न करने के लिए. Indian stock exchanges. So there are 2 major Indian stock exchanges, BSE and NSE. Okay, so BSE is now known as the BSE Limited, established in 1875. ये Asia's oldest stock exchange है. NSE, National Stock Exchange of India Limited, 1992 में फाउंड हुआ था. ट्रेडिंग इसमें 1994 में स्टार्ट हुई थी. कॉमन फीचर्स क्या है इनके? सेम ट्रेडिंग मैकेनिज्म है इनका, ट्रेडिंग आवर्स इनके सेम है, एंड सेम इनका सेटलमेंट प्रोसेस है. ओके, सो दीज आर द सिमिलैरिटीज इन बोथ द स्टॉक एक्सचेंजेस. रेगुलेटर ऑफ सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट के बारे में हम पढ़ रहे हैं. यहाँ पे रेगुलेटरी एक्ट्स हमने पढ़े. अब इसका रेगुलेटर कौन है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सेकेंडरी मार्केट, ये आपके मॉड्यूल में भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है. ये वहीं का स्नैपशॉट है. इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू द मॉड्यूल एज वेल इफ द इमेज इज नॉट क्लियरली विजिबल. So it regulates the buying, selling and dealing in securities, shares, mutual funds, derivatives, etc. Market institutions, stock exchanges, commodity exchanges, depositories, etc. उनको look after करता है ये. Legislation इसके कौन कौन से हैं? SEBI Act 1992, SCRA 1956, Depositories Act 1996 and Companies Act 2013. Okay. Types of securities, 2 टाइप के होते हैं, listed securities and permitted securities. Listed securities क्या होता है? Securities of companies that have signed the listing agreement with the exchanges, traded as listed securities in that exchange. What are permitted securities? It belongs to companies not listed on the exchange but actively traded on other stock exchanges. They are allowed for trading as permitted securities if they meet the exchange norms. तो I hope ये difference आपको बहुत clear है. This is very simple and well explained. Trading mechanism, settlement of transaction, benefit of trading in डीमैट फॉर्म. ट्रेडिंग मैकेनिज्म के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है? ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, उसमें ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाते हैं? इक्विटी शेयर्स, वारंट्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज. Dematerialization, it is the conversion of physical certificates into electronic form. Securities credited into the investor's demat account with depository participant. सेटलमेंट साइकिल यहाँ पे क्या होती है? T+1 सेटलमेंट होता है. ट्रेड डे +1 वर्किंग डे हॉलीडे. बैंक, एनएससी, सैट, संडे एक्सक्लूडेड होते हैं इसमें. ओके, बैंक हॉलीडेज, एनएससी, सैट एंड संडे इसमें एक्सक्लूडेड होते हैं. T+0 सेटलमेंट क्या होता है? ऑप्शनल होता है, लिमिटेड टू 25 स्क्रिप्ट्स.
सिलेक्ट ब्रोकर्स सेबी सर्कुलर मार्च 21-24 में आया था ये। उसमें T+0 सेटलमेंट का प्रोविजन आया था। बेनिफिट्स ऑफ डीमेट ट्रेडिंग यहाँ पे क्या क्या है? दिस इज वेरी बेसिक। फास्टर हो जाता है ये, लोअर कॉस्ट प्लस रिस्क ऑफ एरर यहाँ पे कम हो जाते हैं, एनोनिमिटी कम हो जाती है, वाइडर रीच, परफेक्ट ऑडिट ट्रेल इज मेंटेन्ड फॉर द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डीमेट, listed companies, LODR Regulation 40, transfer request only in DMAT form, transmission, transposition only in DMAT form. अनलिस्टेड कंपनीज के लिए क्या है? रूल 9 में आया है, इशू शेयर्स में बी इशूड ओनली इन डीमैट फॉर्म, बिफोर इशू बाय बैक बोनस राइट्स प्रमोटर्स डायरेक्टर्स KMP must have demat holdings, transfer subscription allowed only if existing securities are in demat form. अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनीज के लिए क्या आया? रूल 9 भी आया हुआ है, सिमिलर प्रोविजन एज ऑफ 9A. ओके, ओके, सो अंडर द टॉपिक ट्रेडिंग मैकेनिज्म आपके टॉपिक से सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग इन डीमैट फॉर्म. So these were the processes for trading, dematerialization and settlement cycle. And here is the benefit of demat. And यहाँ पे आपका regulations are regarding the dematerialization. Okay, for various companies, listed, unlisted or unlisted private companies. Moving next, market participants. तो अगर आप अपने मॉड्यूल में देखोगे तो अभी तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया है. मार्केट पार्टिसिपेंट्स, उसमें सबसे पहला है हमारा मार्केट इंटरमीडियरी. सो व्हाट आर मार्केट पार्टिसिपेंट्स? Market participants in securities market include buyers, sellers, and various intermediaries between the buyers and sellers. Some of these entities are briefed below. Okay. So what are market intermediaries? इनका definition क्या है? They are the service providers in financial market regulated by SEBI, ensuring smooth functioning, investor protection, and compliance. इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? They smoothen the investment process. They bridge the gap between the investor and the user of funds. Corporations, governments use intermediaries instead of directly marketing securities. They help small investors with diversification, risk assessment, and monitoring. They provide investment consultancy, analysis, and credit ratings. They enable secondary market transactions via brokers, registrars, custodians, depositories, etc. Okay, so here is a diagrammatic presentation of the intermediaries in the stock market, which are merchant bankers, registrars and share transfer agents, underwriters, bankers to an issue, debenture trustees, foreign portfolio investors, depository participants, credit rating agencies, research analysts, investment advisors, custodian, portfolio managers, stock brokers, etc. So students, this is very important from your exam point of view as well as from the practical point of view. So in case you are currently in executive and you undergo your training and you are if looking forward to organizations relating to the stock market, these are some of the brokers and intermediaries जिसमें आप अपनी आर्टिकलशिप कर सकते हो. Okay, there are various merchant bankers in our country, उनके अंदर आप काम कर सकते हो. अंडर राइटर्स हैं, क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज हैं, क्रिसिल हो गया वन ऑफ द एग्जाम्पल. सो दीज आर सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से भी देख सकते हो. सो दिस इज some of the examples of intermediaries. If the image is not clearly visible, you can just refer the module as well. मार्केट पार्टिसिपेंट्स में यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में. दिस इज वेरी बेसिक. We have already learned about this. So it is a place where securities are bought and sold. It smoothens the fair transactions for everyone. Buying and selling is done through electronic system on NSE and BSE. The system automatically matches buyers and sellers without revealing their identity. Special agencies and banks are appointed to complete the exchange of money and securities. Second one is depositories. Depositories keep investor securities like shares, bonds, debentures.
Government securities, mutual funds, etc. in electronic and demat form. They make trading, transfer, and settlement paperless and faster. टू मेन डिपॉजिटरीज इन इंडिया आर एनएसडीएल एंड सीडीएसएल. ये बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए. देयर आर टू मेन डिपॉजिटरीज इन इंडिया विच आर एनएसडीएल एंड सीडीएसएल. इनका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एक्ट एज एजेंट ऑफ अ डिपॉजिटरी. दे कनेक्ट इन्वेस्टर्स विद द डिपॉजिटरी सिस्टम. इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? डिपॉजिटरी अपॉइंट्स डीपीज विद सेबीज अप्रूवल. फंक्शंस क्या होते हैं इनके? दे मेंटेन डीमेट अकाउंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स व्हाइल द डिपॉजिटरी मेंटेन्स द कंपनी लेवल रिकॉर्ड्स. ओके, इनका डिफरेंस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेंटेन्स द डीमेट अकाउंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स while the depository maintains the company level records. Demat account must be opened with a registered DP, mandatory for buying and selling of securities. Direct investment not possible without it. SEBI requires it for all the listed company transactions. Okay, this is very important. Market participants में next क्या है हमारा? Trading members, stock brokers and sub brokers. Brokers क्या होते हैं? Brokers are registered member of stock exchanges. They handle the buying and selling of securities. All trades must go through registered brokers. They can be individuals, firms, or companies. Sub brokers act as agents of brokers, not direct. They are not the direct members of the SEBI. SEBI approves brokers after checking capital, office staff, and experience. Brokers charge brokerage maximum fixed by the stock exchanges. Okay, maximum limit is fixed by the stock exchanges. Many provide research and advisory services as well. Custodians क्या होते हैं? A body that holds funds and securities of large clients, example banks, insurance companies, FPIs. इनका roles and function क्या होते हैं? Safekeeping of client securities and funds, settlement of transaction in securities, collection of benefits and rights, example dividend, interest, bonus, right issue. या क्या होता है? आपके benefits and rights होते हैं, उनका collection करता है ये custodian. Record and updates the corporate actions on securities. Inform clients about the actions and change in portfolios. तो custodian का यहाँ पे ऐसे याद रखना: safekeeping, settlement, collection, record and update, and information. These are their roles and functions. Clearing corporation क्या होते हैं? They are the agencies that ensure smooth settlement of trades on stock exchanges. Clearing मतलब clear करता है, ये settle करता है. Okay, so they are the one who are the settlement guarantors. They act as a legal counterparty to every trade. They can be part of stock exchange or a separate entity. इनका roles and function क्या है? Act as a counterparty, buyer to every seller, seller to every buyer. Okay, guarantees settlement of trades, ensures delivery obligations are met by members, and protect the investors' interest by reducing settlement risk. वॉट इफ उसने शेयर्स नहीं दिए, वॉट इफ उसने पैसा नहीं दिया, वैसा वाला चीज यहाँ पे ये होने नहीं देता है. नेक्स्ट वन इज मर्चेंट बैंकर. मीनिंग क्या होता है? सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज होते हैं मर्चेंट बैंकर्स. दे एक्ट एज अ इशू मैनेजर, लीड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर. इनका ये कुछ अलग अलग नाम से इनको आप बुला सकते हो. यू मे कॉल इट मर्चेंट बैंकर्स, लीड मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इशू मैनेजर्स. They serve as a single point contact for issuers during public issue, right issue, bonus issue, IPO, FPO, etc. जब भी आपको कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन आता है, फॉर एग्जांपल IPO, FPO, तो द सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर द मर्चेंट बैंकर्स. फुल फ्लेज्ड आपको यहाँ पे असिस्ट करते हैं आपका कॉर्पोरेट एक्शन करवाने में. ओके, रोल्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं इनके? They manage the entire issue process, for example, drafting prospectus, pricing, marketing. They coordinate with registrars, brokers, bankers, underwriters, credit rating agencies. They assist issuers in SEBI compliance and regulatory filings, and they facilitate investor via depository participants. Okay. So we are done with these many intermediaries. Next one is exchange traded fund, ETF. So what is a ETF? A security traded on stock exchange that tracks an index, commodity, bond, or
basket of assets like Sensex, Nifty, Gold are known as the exchange traded funds. टाइप्स क्या होते हैं इनके? इक्विटी ETF, बॉन्ड ETF, कमोडिटी ETF, इंडेक्स ETF, एक्सेट्रा. How does it works? Buying ETF units, buying shares of a portfolio that mirrors an index. Price of ETF क्या होता है? NAV of underlying asset plus market demand minus supply. Traded like common stock. These are not like mutual funds which are bought sold via AMC, asset management companies. इनके फीचर्स क्या होते हैं वो पढ़ लेना आप, और इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं. Features and benefits, if you want you may merge and you can present the points combinedly in exams as well. Okay. Derivatives के बारे में आपने बहुत सुना होगा. What are the derivatives? So contract whose value is derived from an underlying asset, for example stock, bonds, commodities, currencies, indices, etc., known as the derivatives. इनके common types क्या होते हैं? Futures, options, swaps, forwards. Okay. So as per SCRA, they include security derived from shares, debentures, loans, etc. Contract based on price and index of securities. Commodity derivatives, any government declared instruments. Okay. अब यहाँ पे दो टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं, करेंसी डेरिवेटिव एंड कमोडिटी डेरिवेटिव. आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हो. यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट कट हो रहा है. इफ यू वांट आई विल प्रोवाइड यू द पीपीटी एज वेल. वहां पे क्लियरली विजिबल होंगे जो पॉइंट्स यहाँ पे थोड़े बहुत कट आउट हो जा रहे हैं इन पीडीएफ. ओके. So next, moving on, futures and options under the derivatives. So what are future? So these are exchange traded forward contracts. Buying and selling fixed होती है. Fixed quantity of assets on future date at pre-decided price. Okay. Standardized, centralized trading and they ensure liquidity. Position क्या होती है इसमें? लॉन्ग पोजीशन होती है और एक शॉर्ट पोजीशन होती है. Buy futures, profit if price is higher and loss if price is lower. To delivery to receive and delivery to give. So अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बाय फ्यूचर्स, प्रॉफिट तभी होगा इफ प्राइस इज हायर, डिलीवरी टू रिसीव करेंगे हम. अगर शॉर्ट पोजीशन है तो सेल फ्यूचर्स वाला सीन होएगा, प्रॉफिट जब हमारा तभी होएगा जब प्राइस हमारा कम होएगा. सो डिलीवरी टू गिव वाला सीन होएगा यहाँ पे. करेंसी फ्यूचर्स के बारे में यहाँ पे वो आप पढ़ लो. IFSC सेबी गाइडलाइंस 2015 पढ़ना है आपको यहाँ पे. Just read out. These are not basically that important from the exam point of view, but you must be aware of these topics. Okay. Options क्या होते हैं? Options, these are the right, not the obligation to buy and sell assets at fixed price on or before the expiry. इसमें one party right and other party के लिए वो obligation हो जाता है. एक पार्टी के लिए वो right होता है, दूसरी पार्टी के लिए obligation हो जाता है. Obligation bearer receives option premium in this case. इसमें टाइप्स क्या होते हैं? कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन. बायर्स राइट टू बाय, दैट इज टेक डिलीवरी, एंड बायर्स राइट टू सेल, दैट इज गिव डिलीवरी. आर दे टू पोजीशंस हियर. टाइप्स क्या क्या होते हैं? बाय एक्सरसाइज स्टाइल, यूरोपियन ऑप्शन होता है, अमेरिकन ऑप्शन होता है. राइट्स एंटाइटलमेंट, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट्स एंटाइटलमेंट? Right given to existing shareholders to subscribe to new shares and securities in right issue is a right entitlement. Companies Act का अगर आप सेक्शन याद कर पा रहे हो तो 62 is the section for your right issue. These are allotted in ratio of existing shares as on record date, issued in demat form under separate ISIN. Physical shareholders must provide demat details before issue close. Okay. Option for shareholders: apply for full rights entitlement, rights equity, or apply for full rights entitlement plus additional shares, or apply for part rights entitlement, keep rest idle, or apply for part rights entitlement,
प्लस रिनाउंस रेस्ट और रिनाउंस इन फुल। ओके, सो क्या क्या कर सकता है शेयर होल्डर को, जब ये ऑप्शन मिला, ये राइट मिला है, तो उसके पास क्या क्या तरीके हैं उसको यूज करने की। या तो वो पूरा ले ले, ठीक है, या तो वो पूरा करे और साथ में कुछ एडिशनल के लिए भी अप्लाई करे, एडिशनल शेयर्स के लिए, या तो वो थोड़े बहुत राइट्स को ले एंड बाकी का वो आइडल छोड़ दे, आधे ले और आधे को रिनाउंस कर दे, या तो पूरा ही रिनाउंस कर दे। सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस टू द शेयर होल्डर्स अंडर दिस। नोट क्या है इसमें, अनयूज्ड राइट्स एंटाइटलमेंट लैप्स आफ्टर इशू क्लोजिंग डेट। अगर आपने इशू क्लोजिंग डेट तक कुछ भी वहां पे अपना इंटेंशन नहीं बताया कि आपको कैसे एक्सरसाइज करना है उसको, तो दैट विल बी लैप्स्ड। इन्वेस्टर्स कैन गेट information relating to rights entitlement in the letter of offer filed by the issuer company with the stock exchange and is also available on the SEBI's website. Okay, रिनंसिएशन ऑफ राइट्स एंटाइटलमेंट ऑन मार्केट कर सकते हो या फिर ऑफ मार्केट भी कर सकते हो। सेल्फ राइट्स एंटाइटलमेंट ऑन स्टॉक एक्सचेंज बाय ब्रोकर, लाइक शेयर्स में होता है जैसा। ऑफ मार्केट में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर थ्रू डीपी, डीमैट टू डीमैट। सो बट इट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द इशू क्लोज। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। देर आर वेरियस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, उसके बारे में हम लिंक्ड नोट्स में पढ़ेंगे। सो व्हाट आर लिंक्ड नोट्स, जिन टॉपिक्स का कंटेंट काफी ज्यादा है जो पीपीटी में नहीं आ पाएंगे उनके लिए मैंने क्या किया है, नीचे आपको समरी बना के दे दी है। जहाँ पे मुझे टेबुलर फॉर्म में लगा उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, मैंने टेबल भी बना दिया है सो डेट वो आपको थोड़ा इजी जाएगा। ओके, तो उसको हम बाद में पढ़ते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिन। व्हाट आर मार्जिन्स? So this is an advance payment of a proportion of the value of the stock transaction. It is the amount of credit a broker lender extends to a customer for stock purchase. Okay. Types of margin क्या होते हैं? Initial margin होता है and एक maintenance margin होता है। Initial margin क्या होता है? It is the minimum amount that must be deposited by the client with the broker before purchase. Broker में finance the remaining amount for settlement. परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू होता है ये। क्लाइंट्स अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन होता है इसमें इनिशियल मार्जिन के लिए। मेंटेनेंस मार्जिन के लिए क्या होता है, मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी मेंटेन विद द ब्रोकर आफ्टर परचेज। इट इज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू। इसमें किसमें था, ट्रांजेक्शन वैल्यू का था, इसमें मार्केट वैल्यू का होगा। इट इज बेस्ड ऑन लास्ट डेज क्लोजिंग प्राइस। दिस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डेज क्लोजिंग प्राइस। It ensures continuous adequacy of funds to cover the risk. यहाँ पे मैंने ट्रिक्स दी हुई हैं, वो आप देख सकते हो। आई मतलब इनिशियल, लाइक बिफोर। मेंटेनेंस मार्जिन मतलब मेंटेन मतलब वो बाद में। इनिशियल में क्या होता है, बिफोर परचेज। मेंटेनेंस में क्या होता है, मेंटेन आफ्टर परचेज। दिस इज ऑन गोइंग। Think of it like a college admission fees. You pay an initial deposit to book your seat, then you must maintain minimum attendance to uh, to continue, okay, in your college. So this is a memory trick to remember the initial margin and maintenance margin. Okay. Moving further, block deal and bulk deal. So what is a block deal? A separate trading window facility by SEBI for execution of large trades through stock exchange. गाइडलाइंस इसकी कहाँ पे दी हुई है, इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी सर्कुलर 2005 एंड 2017। न्यू ब्लॉक विंडो मैकेनिज्म इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 Jan 2018। सेशन टाइमिंग यहाँ पे क्या होती है, मॉर्निंग की 8:45 to 9 AM, आफ्टरनून की क्या होती है 2:05 PM to 2:20 PM अंडर द ब्लॉक डील। की रूल्स क्या है इसमें, मिनिमम ऑर्डर साइज ₹10 करोड़ का होना चाहिए मिनिमम। ऑर्डर्स अलाउड ओनली विद इन +1 -1% of reference price. Stock exchange publish details, script name, client's name, quantity, price, etc. same day after the market hours. Okay. So block deal में मतलब ये बड़ी डील होती है, 10 करोड़ तक का मिनिमम होता है इसमें ऑर्डर साइज, 2 स्लॉट्स, 1% का बैंड होता है, प्लस या माइनस। ओके। बल्क डील क्या होता है, a trade where buying and selling is more than 0.5% of the total equity shares of a listed company. Trading done through the normal trading window can happen throughout market hours, no time restricted. Market driven होता है ये, unlike block deals. Disclosure क्या होता है इसमें, broker must disclose a script, client name, quantity,
ट्रेडेड प्राइस टू स्टॉक एक्सचेंजेस, इफ सिंगल ट्रेड इमीडिएटली डिस्क्लोज करना होता है, इफ मल्टीपल ट्रेड्स हैं विद इन 1 आवर आफ्टर द मार्केट क्लोजेस, बल्क ऑर्डर्स आर विजिबल टू ऑल द इन्वेस्टर्स। बल्क ऑर्डर्स में 0.5% का यहाँ पे टाइट होता है, एनी टाइम दिस कैन बी डन, पब्लिकली विजिबल होता है। सो यहाँ पे इसका समरी है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स, सो व्हाट आर स्टॉक मार्केट इंडेक्स? They measure the overall behavior of the equity market, created using a group of respective representative stocks, calculated with reference to a base period and base value. Benefits क्या होते हैं इनके? Helps compare stock performance versus benchmark, track the performance of market and various sectors, provides historical comparison with other investments, standard for comparing fund performance, lead indicator of economy sector, used in index funds, futures, options, etc. टाइप्स ऑफ इंडाइसेस क्या क्या होते हैं? बेंचमार्क इंडाइसेस, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, जिसमें 30 स्टॉक्स होते हैं, टॉप 30 स्टॉक्स। सेक्टोरल इंडेक्स होता है जिसमें निफ्टी बैंक आ जाते हैं, मतलब सेक्टर वाइज यहाँ पे हो जाता है इंडेक्स। निफ्टी मतलब बैंक्स के लिए होगा तो निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, बीएससी हेल्थ केयर एक्सेट्रा, सम ऑफ द सेक्टोरल इंडेक्सेस। मार्केट कैप इंडेक्स में क्या आ जाएगा? बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इंडेक्स से प्रिपेयर करेगा, दैट इज नोन एज द मार्केट कैप इंडेक्स। बेसिस ऑफ सेंसेक्स क्या होता है? A Sensex sensitive index is the benchmark index of the Bombay Stock Exchange, first published in 1986. It represents 30 large financially strong companies from different sectors, reflecting the overall market trend. So since 2003, Sensex is calculated using the free float method, which considers only the shares available for public trading and excludes promoter or logged in holdings. Okay. तो इसका ट्रिक क्या है? सेंसेक्स इज इक्वल्स टू 30 जेंट्स, मतलब टॉप 30 कंपनीज, एंड फ्री फ्लोट मेथड यूज करता है, एंड विच कंसिडर्स द शेयर्स अवेलेबल फॉर पब्लिक ट्रेडिंग ओनली, एंड एक्सक्लूड क्या करता है? प्रमोटर की शेयर होल्डिंग और जो भी शेयर्स लॉग्ड इन वाले सेक्शन में है कंपनी के, ओके, जो शेयर्स लॉग्ड है उनको एक्सक्लूड करता है ये। डिफरेंस बिटवीन मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड फ्री फ्लोट मेथड, उनका डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, मींस प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, दैट इज मार्केट कैप। फ्री फ्लोट मेथड क्या होता है? इट कंसिडर्स ओनली शेयर्स अवेलेबल फॉर पब्लिक ट्रेडिंग, एक्सक्लूडिंग प्रमोटर, गवर्नमेंट एंड लॉक्ड इन होल्डिंग्स, ओके। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन में आपके सारे शेयर्स आ जाते हैं मल्टीप्लाई बाय उनका प्राइस, एंड इसमें आपके ओनली द पब्लिकली ट्रेडेड शेयर्स इंक्लूड होते हैं। सो दिस इज वेरी बेसिक, आपको पता होना चाहिए। सेंसेक्स कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करोगे आप? सेंसेक्स, फाइंड मार्केट कैप, प्राइस मल्टीप्लाई बाय शेयर्स, अप्लाई free float factor to get free float market cap, use ratio and proportions with base index 100, Sensex value, okay। ट्रिक क्या है इसकी? मार्केट कैप, all the shares free float, only free shares are there, okay, in free float method। निफ्टी 50 नाम सुना ही होगा, is the benchmark index of the National Stock Exchange comparing 50 large liquid stocks across the sector. It is owned and managed by IISL, India Index Service and Products Limited. Nifty is calculated using the free float market capitalization weighted method, which considers only freely traded shares to the investable weight factor. Okay. The index value is derived by dividing the current free float market capitalization by the base market capitalization and multiplying with the base value of 1000. Nifty acts as the broad market indicator and serves as a benchmark for portfolios and mutual funds. निफ्टी, इसमें 50 शेयर्स होते हैं, टॉप 50 फ्री टू फ्लोट वाले शेयर्स को कंसिडर करता है ये, और इसका बेस होता है 1000 का बेस वैल्यू, ओके। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। वी विल जस्ट गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। सो बेसिकली इसमें क्या बता रहा है कि क्या क्या गाइडेंस किसी भी इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। सो बिफोर इन्वेस्टिंग एन इन्वेस्टर मस्ट फिक्स गोल्स, उसका गोल क्या है, टाइम होराइजन एंड रिस्क एपेटाइट, वो कितना रिस्क ले सकता है।
Investment always carries risk like market risk, unsystematic risk, inflation, liquidity, volatility, and currency risk. Okay. So types of risk in investing are market risk. ये पढ़ लो आप, लॉस ड्यू टू ओवरऑल मार्केट एंड इकोनॉमी फॉल, अनसिस्टमैटिक रिस्क, लॉस ड्यू टू कंपनी इंडस्ट्री इश्यूज, inflation risk, money loses value as price rises, liquidity risk, can't buy and sell investment quickly, वहां पे liquidity का issue आ जाता है, volatility risk, prices fluctuate sharply, currency risk, loss due to forex rate changes. तो यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझा दिया कि सारे रिस्क का मतलब क्या होता है. यू मे elaborate it accordingly, okay, as per your understanding. If you want, you just give it a read from the module as well, and you will be very clear about the concept. To invest, one needs the bank account plus trading account plus demat account for investment. Okay, so why do you need a bank account? Obviously for money. Okay, where your money is kept. Trading account जो कि सेबी ब्रोकर के साथ आपको ओपन करेगा, where your shares will be kept, and demat account to hold the securities. Okay, so these three are the main accounts which you must have before investing. Opening requires KYC like PAN, Aadhaar, passport, voter ID, etc. So under PMLA 2002, it is mandatory. KYC is a one-time process valid across intermediaries. Okay, सारे intermediaries के लिए same रहेगा. This was a very basic and generic topic for investors in general, not only for you. Clearing corporations. तो clearing corporations के बारे में हम पढ़ते हैं. It handles clearing and settlement of trades on stock exchanges, manages collateral deposits and risk control, provides counterparty guarantee to reduce risk, ensures short and consistent settlement cycle, functions under the SEBI approval, takes over duties of clearing house, settlement of contracts, delivery and payment, related matters. It must frame a bylaw and get SEBI approval. ओके, सो यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है. इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू द मॉड्यूल वंस, एंड फिर आप अगर पीपीटी देखोगे तो यू विल बी वेरी मच क्लियर विद द कंसेप्ट्स. ओके, मार्केट सर्विलेंस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी जेनरिक टॉपिक कि मार्केट सर्विलेंस क्या होता है. सो इसका पर्पस क्या होता है? इट इंश्योर्स मार्केट इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स थ्रू सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट. रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया क्या है इसकी? स्टॉक एक्सचेंजेस अंडर द सेबीज क्लोज मॉनिटरिंग. मैकेनिज्म क्या है? ये ऑटोमेटेड टूल्स डिटेक्ट इरेगुलरिटीज इन मिलियंस ऑफ ट्रेड्स. ओके, टाइप्स ऑफ सर्विलेंस क्या होते हैं? ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है. प्राइस वॉल्यूम मॉनिटरिंग होती है ऑनलाइन वाले में. डायनामिक प्राइस बैंड्स, फिक्स प्राइस बैंड्स देखता है ये. ऑफलाइन वाले में ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस चेक थ्रू करते हैं. स्पेशल सर्विलेंस मेजर्स क्या क्या हैं? जीएसएम एंड एएसएम. ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर on securities with price not matching fundamentals. ASM, additional surveillance measures on securities with unusual price, volume, volatility, etc. जिसमें ये सारी चीजें वो ऑब्जर्व करेंगे, उसका एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स बोलते हैं. ट्रिक क्या है इसकी? सर्विलेंस इज इक्वल्स टू ऑनलाइन, उसमें बैंड्स आ जाते हैं, प्लस ऑफलाइन में इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, प्लस एक्स्ट्रा में जीएसएम एंड एएसएम आ जाता है. ऐसे आपको ये तीनों पॉइंट्स याद रहेंगे. रिस्क मैनेजमेंट इन सेकेंडरी मार्केट, दिस इज अ वेरी जेनरिक टॉपिक. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस, गिव इट अ रीड. इम्पैक्ट ऑफ वेरियस पॉलिसीज इन स्टॉक मार्केट. तो जैसे कि हमने वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क देखे थे कि रिस्क को किन किन चीजों की वजह से हो रहा है, तो कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो अब मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं, वो भी एक पॉइंट है, वो भी हम लिंक नोट्स में पढ़ लेंगे. सो यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, हमने बोला था कि हम लिंक नोट्स में पढ़ेंगे, तो कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म्स हैं? एक एनएससी मेन बोर्ड है, एक एसएमई प्लेटफॉर्म है, एक है आईजीपी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म. सो यहाँ पे डिफरेंस हमने किस किस बेसिस पे किया है? एप्लीकेबिलिटी, उसका एलिजिबिलिटी एंड की फीचर्स क्या क्या है. ओके, मेन बोर्ड के बारे में पहले पढ़ते हैं. So this is for large established companies raising capital via IPO, FPO, debt, etc. So this is for large companies. Okay. इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होती है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए होता है हमको ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस के थ्रू, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, IPO registration with SEBI, debt securities must also be listed with them,
नो अपर कैप ऑन पेड अप कैपिटल। ओके, पेड अप कैपिटल पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है हमारा कि यहीं तक होगा, यू कैन इंक्रीज इट एज फार एज यू कैन। द कंडीशन इज आपका ऑथराइज कैपिटल वहां पे सफिशिएंट होना चाहिए। ये फीचर्स क्या है इनके? इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स, इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एंड डेट लिस्टिंग। हाई रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं यहाँ पे, प्रोवाइड्स एक्सेस टू रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एसएमई प्लेटफॉर्म किसके लिए होता है? जिसको बीएससी एसएमई भी बोलते हैं, मतलब दो डिविजन आ जाते हैं यहाँ पे, बीएससी एसएमई एंड एनएससी इमर्ज। मेन बोर्ड में एनएससी और बीएससी हो जाते हैं, एसएमई प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे नाम हो जाता है इनका बीएससी एसएमई एंड एनएससी इमर्ज। ओके, सो फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमईज होते हैं ये, सीकिंग टू रेज फंड्स एंड ग्रो। ओके, इसमें दीज आर एसएमईज इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनीज एक्ट, पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल इनका अप टू 25 करोड़ हो, नेट वर्थ ग्रेटर देन 1 करोड़ फॉर पास्ट 2 years। ये इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्राइटेरियाज वंस। एनएससी ये बीएससी मर्ज, ये बीएससी एसएमई के लिए है, और एनएससी मर्ज के लिए देयर आर ओनली टू कंडीशंस। दीज आर डिजाइन्ड फॉर इमर्जिंग बिजनेस टेक स्टार्टअप्स, फोकस ऑन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रोथ पोटेंशियल्स। लोअर कंप्लायंस होते हैं एज कम्पेयर टू द मेन बोर्ड, हेल्प्स एसएमई लिस्टिंग एंड एक्सेस इक्विटी कैपिटल। इन्वेस्टर फ्रेंडली फ्रेमवर्क होता है यहाँ पे, डेडिकेटेड एसएमई इंडेक्स फॉर विजिबिलिटी, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केट क्रेडिबिलिटी। आईजीपी क्या होता है? फॉर हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स, आईटी, बायोटेक, data analytics, IP lead businesses, etc. So at least 25% pre-issued capital held for 1 year by the QIBs, IGP investors, FPIs, large pooled funds, etc. Okay. मिनिमम एप्लीकेशन साइज इसमें 2 लाख का होता है, मतलब अगर आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हो तो ऐसे में आपके लिए महंगा पड़ेगा एज कम्पेयर टू द मेन बोर्ड। मेन बोर्ड में हमारा मिनिमम कितना 15,000 का जाता है हमारा लॉट। ओके, बट अगर एसएमई में आप पैसा लगाते हो तो वहाँ पे अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मिनिमम अलॉटीज यहाँ पे 50 होते हैं आईपीओ में। एलोकेशन इंस्टीट्यूशनल प्लस नॉन इंस्टीट्यूशनल प्रोपोर्शनल बेसिस पे होता है। दीज आर डिजाइन फॉर इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप्स, एक्सेस टू इन्फॉर्म्ड क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स यहाँ पे मिलता है, उनको एक्सेस मिलता है। इजियर नॉर्म्स वर्सेस मेन बोर्ड बट स्ट्रिक्टर देन द एसएमई। ओके, मेन बोर्ड के कंपैरिजन में इजियर नॉर्म्स होते हैं बट स्ट्रिक्टर होते हैं। इनकरेजेस लिस्टिंग ऑफ न्यू एज टेक कंपनीज। ओके, उनको इनकरेजमेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था। एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी होता है। दीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओज, एंड फॉर प्रॉफिट social enterprises raising funds with primacy of social intent. Okay, must establish social intent in areas like health, poverty eradication, education, gender equality, environment, etc. At least 67% revenue expenditure beneficiaries from target population in last 3 years, यहाँ से इनका 67% रेवेन्यू होना चाहिए। ओके, एनपीओज मस्ट रजिस्टर विद एसएससी फॉर फंड रेजिंग। कॉर्पोरेट फाउंडेशंस, रिलीजियस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नॉट एलिजिबल। सेपरेट सेगमेंट अंडर एनएससी एंड बीएससी focuses on special impact plus fundraising, provides transparency in social sector funding, unique model aligning capital market with social development. Okay, तो यहाँ पे एक टेग्मेटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का। मेन बोर्ड वहाँ पे बीएससी मेन बोर्ड, एनएससी मेन बोर्ड, एसएमई में बीएससी एसएमई एंड एनएससी इमर्ज, फिर आईजीपी आ जाते हैं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज आ जाते हैं। तो अगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोई भी आपको पूछेगा तो आपको ये डायग्राम याद आना चाहिए एंड बेसिक वहाँ पे आपको डिफाइन करते हुए आना चाहिए टॉपिक्स को। ओके, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे इमर्ज वर्सेस मेन बोर्ड, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस डिफरेंशिएशन, ये आपके मॉड्यूल में भी बहुत शॉर्टली डिफाइन किया हुआ है। फिर यहाँ पे पॉलिसीज, सो आई हैव जस्ट मेड अ जिस्ट ऑफ ऑल द पॉलिसीज जो आपके मॉड्यूल में कवर थे। यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड कि कैसे कैसे ये सारी पॉलिसीज हमारे मार्केट को अफेक्ट करेंगी, है ना, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। पॉलिसीज जैसे भी आएंगे उनका रिपरकेशंस हमारे स्टॉक मार्केट पे कैसा पड़ेगा। तो यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड टू ऑल दिस पॉलिसीज एंड वी आर गुड टू गो, and we are done with our chapter number 2. So I hope you are very much confident after the revision of this chapter. For the notes, you can just pin me on the number
visible on the screen. And for any other help, assistance, or guidance you want from me regarding the exams, you can just connect me through this number. Okay. So have a happy studies. Be relieved. There is still time of around 2.5 months. And even if you are consistent throughout these period, you will definitely be able to tackle the exams. Okay. So have a happy studies and stay hydrated, stay healthy. Bye.